Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students, today we will explore the facts about the entitled theme, Functions of Educational Psychology. As dear learners, we know that educational psychology plays very important role towards the whole teaching learning process. There are the various functions of educational psychology. The major functions of educational psychology are highlighted as under. Number 1, educational psychology is to provide a thorough knowledge of the child. There is the heterogeneity within the classroom. The teacher has to provide the knowledge to the every learner as per the individual differences, because no two learners are same. They are different in every respect. They are different in terms of capacities, in terms of capabilities, desires, wills, wishes, temperaments, sentiments, attitude, aptitude, and other personality characteristics. तब तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब तक कि इंडिविजुअल को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से एजुकेशन नहीं मिलेगी. That is why the major function of educational psychology is to help the teacher to know the individual differences. Number 2, educational psychology helps to teacher to study the mental health of the students. In order to make a teaching learning process effective, goal oriented, it needed the sound mental health of every learner. Mental health simply means psychological, emotional and social well-beingness of an individual. और हर एक लर्नर के लिए ज़रूरी है वो साइकोलॉजिकली, इमोशनली फिट होना चाहिए. अगर किसी लर्नर का मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आई मीन टू से यू सुटेबल नहीं है, इट मीन्स वी कैन नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर characterized by dear students personality disorder, mood disorder, anxiety disorder, bipolar disorder, psychotic disorder, depression and other types of mental conflicts. और लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल के पास, एक लर्नर के पास पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए. तो इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल हाउ टू improve the mental health, how to remove the or reduce the mental problems. चाहे mental problem स्ट्रेस की सूरत में है, एंजाइटी की सूरत में है या डिप्रेशन और other types of psychological complexities which are faced by the learner. Number 3, educational psychology helps a teacher to choose an appropriate methods of teaching. As we know that teaching simply means interaction between the two persons, one whom we called teacher, second whom we called learner. और सही टीचिंग के लिए the teacher has to use appropriate
methods of teaching. अगर appropriate method of teaching use नहीं होगा तो we cannot achieve the learning objectives. We cannot meet our ends. इसीलिए educational psychologists lay focus on diverse teaching methods. For example, learner-centered method, content-centered method, participative method, project-based method, cooperative learning, group learning, individual learning, playway method, learning by doing method, inquiry learning, by and large discussion method. Dear students, the due importance is given to these series of methods in order to make the teaching learning process result oriented, goal oriented, in order to achieve the objectives of teaching. That is why different psychologists laid emphasis upon the series of methods should be used so that teacher can achieve the teaching learning objectives. Number 4, educational psychology study maladjusted behavior of students and how to treat the maladjusted behavior. Maladjusted behavior may be related to the school. It may be related to the home, or it may be related to the society. And there are the various fundamental causes which are responsible for maladjusted behavior. जैसे कि हम सब जानते हैं, घर में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, आई मीन टू से यू फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या ब्रोकन होम कंडीशन है, तो उस ब्रोकन होम कंडीशन की वजह से या पुअरिटी की वजह से या कोई और फैमिलियल इशू है, उसका असर डायरेक्टली लर्नर पे पड़ता है, बच्चे पे पड़ता है, जिसकी वजह से द चाइल्ड डिस्क्राइब्स द maladjusted behavior. और maladjusted behavior जो है इट मे बी रिलेटेड टू द स्कूल, यानी कि स्कूल मे बी वन ऑफ द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ maladjusted behavior. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में पुअर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड नहीं है, या स्कूल में बच्चे के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, या स्कूल में अनसाउंड और अनहेल्थी एनवायरनमेंट है, लाइक डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कम्युनिटी, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ रीजन, या स्कूल में बुलिंग है, दैट बुलिंग इज नोन एज स्कूल बुलिंग. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, स्कूल बुलिंग मीन्स जब एक लर्नर दूसरे लर्नर को इमोशनली हर्ट करेगा, यानी कि कॉलिंग नेम्स, एक्सप्लॉइट करेगा, अब्यूज करेगा, दैट इज नोन एज स्कूल बुलिंग. एंड दीज प्रोमिनेंट कॉजेज फाइनली रिजल्ट इज द maladjustment of the learner. Yeah, apart from school maladjustment or home maladjustment, there would be the social maladjustment as well. When there are the big conflicts which are taking place within the web of the society, these all factors are responsible for the maladjustment of learner or learners. Or educational psychology plays very important role. How to identify the maladjusted behavior and how to reduce the maladjusted behavior among the learners or in a learner. Number 5, educational psychology helps to curriculum planners to design comprehensive curriculum for the all-round development of the
learner. The fundamental objective of teaching learning process is to bring the all-round development. और all-round development possible नहीं है without designing the comprehensive curriculum. It is the educational psychology basically which helps not only the teachers but also curriculum planners, policy makers, how to design the sound and comprehensive curriculum so that we will lead the learner towards the all-round development. All-round development in sense, physical development of the learner, intellectual development of the learner, emotional development of the learner, social development of the learner, and by and large, spiritual development of the learner. 2020 policy of an education, which has been designed under the chairmanship of Kusturi Rangan. That policy has given the concept of 360-degree progress report. Dear students, 360-degree progress report will reflect both curricular aspect and co-curricular aspect of the learner. अब बच्चा जो है वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका प्रदर्शन जो है वो सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा नहीं होना चाहिए. आई मीन टू से यू एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ द लर्नर. अपार्ट फ्रॉम इट जो लर्नर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए स्पोर्ट्स, गेम्स, डिबेट्स एंड डिस्कशंस में. सो व्हेन बोथ द एस्पेक्ट्स आर sound in the learner, it will automatically lead the learner towards the holistic development. Number 6, educational psychology helps teachers to develop suitable habits in students. The educational psychology plays significant role in order to develop suitable habits or healthy habits among the learners. Dear students, as we know that drug addiction, I mean to say you substance abuse, is the worldwide problem. So far as recent research reports are concerned, those students whose age bar is 12 to up to 20 or 21, big chunk of the population is indulged in the drug addiction. यानी कि जो लर्नर्स है, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल लर्नर हैं, सेकेंडरी लेवल लर्नर हैं या हायर एजुकेशन लर्नर हैं, दे आर टेकिंग द marijuana, चरस, opium, ganja, alcohol and other intoxic substances. So education psychology helps the teachers that to eliminate or pipe out the drug addiction like problem. Now it is not the responsibility of the teachers but other stakeholders like parents, like government organizations and semi-government organizations. Nutshell, we can say that we have to develop the good and healthy habits among the students. Dear students, apart from drug addiction, educational psychology helps to develop the other prominent habits among the learners, like कि child should not use offensive language. यानी कि ये जिम्मेदारी बनती है टीचर्स की कि कोई भी बच्चा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए या बच्चे में एलिमिनेट करना स्टीलिंग, थेफ्टिंग, लूटिंग और अदर एंटी सोशल एक्टिविटी. There is the prominent role which can performed by both teachers and parents to develop the character formation in the learner or learners. The learner should able to make a differentiating line between the good and bad,
right and wrong, pure and impure, chaste and unchaste, justifiable and unjustifiable. Number 7, educational psychology helps teachers to use right pedagogy. The teacher must use appropriate pedagogy. I mean to say you teaching techniques like what to teach. What to teach means the focus is on content. टीचर को पता होना चाहिए कि मुझे क्या कंटेंट पढ़ाना है, यानी कि विदाउट प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान, कि एक टीचर को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, थ्रो एंड थ्रो नॉलेज होनी चाहिए कि आज मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, चाहे वो मैथमेटिक्स टीचर हो, चाहे वो सोशल साइंस टीचर हो, लैंग्वेज टीचर हो, इथिक्स का टीचर हो, या किसी और सब्जेक्ट का टीचर हो, कंप्यूटर साइंस का टीचर हो, एटसेट्रा. Number 2, how to teach. Dear students, focus is on art of teaching. How to teach simply means art of teaching. अगर एक टीचर नॉलेजेबल है, टीचिंग कॉम्पिटेंसी उसमें है, द टीचर इज स्किलफुल, लेकिन उसके पास आर्ट ऑफ टीचिंग नहीं है, प्रॉपर मेथडोलॉजी नहीं है, देयर इज 100% ऑफ फेलियर, no guarantee of success. That is why educational psychology focuses on how to teach. Teacher should develop the art of teaching. Without the art of teaching, the teacher cannot come to the level of student. Number 3, home to teach. Dear students, home to teach means focus is on capacities, कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर, यानी कि फोकस यहाँ पर है लर्नर पे कि किसे पढ़ाना है. एक टीचर के पास नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द कॉम्पिटेंसीज, अबाउट द कैपेसिटीज, अबाउट द कैपेबिलिटीज, अबाउट द एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आई मीन टू से ओवरऑल पर्सोना ऑफ द लर्नर. ये इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ज़रूरी है जानना एक टीचर के लिए. जब तक कि एक टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं जान सकता है, तब तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ जस्टिस नहीं होगा. बिकॉज एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट और बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, एंड वी हैव टू प्रोवाइड द एजुकेशन as per the capacities and capabilities, as per the wills and wishes of the learner. Where to teach? Dear students, focus is on conducive environment. Where to teach means the place where the teacher is going to encounter the ideas. और जहाँ पर एक टीचर अपने आइडियाज का ऑपरेशन करना चाहता है, that very place should be very much congenial. I mean to say you the atmosphere which is prevailing within the institution, that should be healthy, that should be free from any social conflict, any type of psychological problem. अगर unhealthy climate होगा, it will directly affect not only the learner but whole teaching learning process. Unhealthy type of climate leads the student in the psychological state where the learner has maximum chances to become victim of aggression, frustration, depression, stress. I mean to say you at the end that exploitation of the learner takes place. And these were the all functions of educational psychology towards the teaching learning process. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.